Press Conference. It is indeed a pleasure to introduce you all to Tempsens. This is India's leading thermal engineering and specialized cable manufacturer. Tempsens design and manufacture niche and fully customized product across three verticals: temperature sensing solutions, electric heating solutions, and specialized cables. And they offer diverse product portfolio for complex and critical applications across 15 plus end user industries. This includes large and stable industries like power, steel, oil and gas, railway, pharmaceutical, and the fast growing industries like aerospace, defense, space, nuclear, and some of the emerging industries like green hydrogen, etc., where temperature sensing, controlled heating, and connectivity are essential to the core manufacturing process. Along with this, they have a very healthy and balanced mix of capex plus MRO business, where they are participating in the journey of capex of these end user industries, and also they are equally participating in replacing those equipments. So in nutshell, this is a mirror image of India's industrial GDP along with a strong export growth potential. Now, I would like to highlight some of the market leadership positioning of Tempsens. So, first of all, Tempsens is India's largest manufacturer of contact and non-contact temperature sensor, and they hold about 10.5% market share in temperature sensor segment. Along with this, they are the only Indian manufacturer of non-contact temperature sensor in terms of technology, and that they are competing with other large foreign players. And they are one of the very few manufacturers who which have a deep backward integrated facility, which means they make the advanced conductors as well as the mineral insulated cables, which are critical for their end user products. And they are one of the largest manufacturers of electric heating solutions also in terms of installed capacity. So their leadership position demonstrate their strong R&D capabilities, and they have about 80 plus R&D employees. And their major focus are twofold. One is to indigenize the equipments which are expensive and supplied by the foreign players. So they are focusing on indigenizing that. And then to bring on process efficiency and cost optimization in the existing products by doing backward integration and by adding more efficiencies. Tempsens has also have a proven track record of building a global footprint, and they have sort of exported to almost 80 plus countries through India as well as their subsidiaries and JVs. And they have almost 15 integrated manufacturing facilities, out of which there are present in India and 5 are across the globe. Now let me also talk about their financial performance. So on financial side also, they have done a very good job. And over the last 2 years, their revenues have grown at a CAGR of about 27%. Their EBITDA has grown at a CAGR of about 37%, and their PAT has grown at about a CAGR of 32%. Now let me introduce the dignitaries from the company. So we have Mr. Vinay Rathi, he is the promoter and CEO of the company and the second generation of the family. Next to him we have Ms. Priyanka Minaria, she is the Chief Financial Officer of the company. And next to her we have Mr. Aryan Rathi, he is the third generation of the family, and at Tempsens he is heading the global sales. Now coming to the key details of the issue. The IPO is about 650 crores, wherein fresh issue is about 95 crores, and the OFS is of about 555 crores. The price band is 285 rupees on the lower side, and on the higher side is 300 rupees per share, and the face value is about 4 rupees per share. This is an offer as per Regulation 6(1) of SEBI ICDR, wherein 50% is marked to QIP, and I has a 15% share, and the retail has a share of about 35%, and the company has allocated about 1.5 crores for employees. The IPO is going to open for subscription on 20th of August, that is Thursday, and going to close on 24th of August, that is Monday. And the anchor is going to open on Wednesday, that is 19th of August, which is tomorrow. Now with this, we would request good support from all of you.
आफ्टरनून एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आपको हिंदी या इंग्लिश? आई एम कंफर्टेबल विद बोथ। हिंदी गुजराती बात है। तो जैसे कृष्ण ने बताया है, टेम्पसेंस जैसे नाम सजेस्ट करता है, वी स्टार्टेड विद टेम्परेचर सेंसर and we are serving the industrial clientele. So you won't hear us in the normal consumer industry. तो हम लोग काम करते हैं सभी तरह के पावर प्लांट, स्टील प्लांट, पेट्रोकेमिकल प्लांट, ग्लास प्लांट, प्लास्टिक, न्यूक्लियर, स्पेस, सभी तरह की कंपनीज के साथ काम करते हैं। जैसे किसी ने बताया, मेरा नाम विनय राठी है। मैं सेकेंड जनरेशन, मेरे फादर ने कंपनी चालू करी थी 1990 में, और प्रियंका शी हेडिंग द फाइनेंस पोजीशन और आर्यन इज हेडिंग द ग्लोबल सेल्स। कंपनी के बारे में वापस मैं आपको बताऊं कि आज के दिन में जो टेम्पसेंस काम कर रहा है वो 3 मेजर प्रोडक्ट रेंजेस में काम कर रहा है। पहला है टेम्परेचर सेंसर, मतलब कोई भी इंडस्ट्री या प्रोसेस के अंदर आपको टेम्परेचर सेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर आप समझे कि कोई पावर प्लांट है तो टेम्परेचर सेंस करके वो एक ऑटोमेशन सिस्टम में जाता है, जहाँ से वो फायर करता है कोल को या जो भी मतलब टेम्परेचर बढ़ाने या कम करने की चीज, और इसलिए बहुत क्रिटिकल है। आप समझिए कि पावर प्लांट में टेम्परेचर सेंसर हो सकता है 0.1% की उसकी कॉस्ट होती है कैपिटल की, बट उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि वो सही तरह के प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी है। क्योंकि अगर कोई जैसे बॉयलर चल रहा है पावर प्लांट में, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही रहना चाहिए, अदरवाइज वो चीजों को डैमेज कर सकता है। दैट इज वन थिंग। सेकंड चीज है कि प्रोसेस की ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप फ्यूल ज्यादा जलाएंगे तो फिर इसका मतलब आपका उत्पादन इतनी सही लागत का नहीं बनेगा। और तीसरा है सेफ्टी के लिए, इसलिए टेम्परेचर सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल हीटर्स काम आते हैं जहाँ पे प्रोसेस को आपको बहुत माइन्यूटली कंट्रोल करना है पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए। अगर समझिए कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, आप स्टील को सॉफ्ट या हार्ड कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होता है। देयर इज अ स्मॉल बैंड ऑफ टेम्परेचर +5 डिग्री जहाँ पे आपको कंट्रोल करना पड़ता है। देयर इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज यूज्ड एंड स्पेशलाइज्ड केबल्स इज यूज्ड टू कनेक्ट दीस सेंसर्स टू द ऑटोमेशन सिस्टम और द ऑटोमेशन सिस्टम टू द एक्टिवेशन डिवाइसेस। तो इस तरह से ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तीनों सभी तरह की इंडस्ट्रीज में काम आती है, भले ही वो स्टील हो, पावर हो, सीमेंट हो, पेट्रोकेमिकल हो। So we are working with more than 3,500 customers in India and worldwide, supplying to 80 countries. आप समझिए कि हम लोग इंडिया का जो मेक इन इंडिया का मिशन है उसके अंदर हम काम करने में अग्रसर है। उससे भी ज्यादा इंजीनियर इन इंडिया के अंदर और ज्यादा अग्रसर है। हमारे जो प्रोडक्ट है और टेक्निकल कॉम्पिटेंसी, आप समझिए प्राइस के बेसिस पे नहीं, टेक्निकल कॉम्पिटेंसी पे कस्टमर खरीदता है। और हम इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड के भी काफी मेजर प्रोड्यूसर्स इन सभी इंडस्ट्रीज के वहाँ पे हम लोग काम करते हैं। जैसे कृष्ण ने ऑलरेडी बताया कि हम लोग इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं टेम्परेचर सेंसर्स के, और कुछ प्रोडक्ट के अंदर वी आर द ओनली मैन्युफैक्चरर इन इंडिया। ये प्रोडक्ट हिंदुस्तान के लिए बनाए गए, मगर इनको बनाया गया उस तरह से कि ये वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट किया जाए। तो इसीलिए हम मतलब सभी तरह के देशों में काम कर रहे हैं, भले वो मिडिल ईस्ट हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, यूरोप हो, चाइना हो, यूएस हो, मैक्सिको, तो हम सभी करीब सभी देशों के साथ काम कर रहे हैं। एक मेजर जो एक और चीज जो है कि हमारी कंपनी इंडिया में नहीं 5 और देशों में भी है। हम लोग जर्मनी में भी हमारी फैक्ट्री है, इंडोनेशिया में फैक्ट्री है, यूएई में भी फैक्ट्री है, पोलैंड, कोरिया और मैक्सिको में भी फैक्ट्री है। टोटल 7 देशों में हम लोगों का डायरेक्ट प्रेजेंस है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑल्सो सप्लाई। इस तरह के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं ये 2 जगह काम में आते हैं। एक नया अगर पेट्रोकेमिकल प्लांट लग रहा है तो उस केस में तो कोई जो प्रोजेक्ट कर रहा है, दे वुड परचेज आवर ईपीसी जिसको बोलते हैं, दे वुड परचेज आवर प्रोडक्ट्स। सेकंड चीज है, इसका एक बड़ा रिप्लेसमेंट मार्केट भी है। ये टेम्परेचर सेंसर ऐसे एग्रेसिव एनवायरनमेंट में जा रहे हैं जहाँ पे इनका जो लाइफ है it could be a few days to a few years depending on the aggressive nature of the environment। अगर आप समझिए स्टील प्लांट की, अगर सीमेंट प्लांट की किल के अंदर ये टेम्परेचर सेंसर लग रहा है तो 2 हफ्ते में वो सेंसर खराब हो जाता है, तो चेंज करना पड़ता है। So there's a big replacement demand also. About 30% of the business that we do is from the replacement demand and 70% is project. और कंपनी ने लास्ट ईयर करीबन 450 करोड़ रुपए का टर्नओवर किया है विद अ वेरी हेल्दी मार्जिन। वी हैव बीन ग्रोइंग pretty rapidly
और हमको लगता है कि क्योंकि ये प्रोडक्ट एक्सपर्टीज के कारण, मार्केट एक्सेस के कारण हमारे पास काफी संभावनाएं हैं जहाँ पे हम वर्ल्ड वाइड केटर कर सकते हैं। जो मार्केट को हम केटर कर रहे हैं, मतलब जो टोटल मार्केट साइज है वो बहुत बड़ा है, और इसी कारण से हमको लगता है कि कंपनी के अंदर काफी ग्रोथ पोटेंशियल आगे जाने के लिए है।